Good morning 11th class. We were on our chapter 3 of geography, drainage, जिसमें हमने बेसिक ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज पैटर्न्स क्या होते हैं एंड अलग अलग क्लासिफिकेशंस में डिवीजन में हमने ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया को कैसे डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ किस जगह पे वो वाटर जो अपना डिस्चार्ज कर देती है ओरिएंटेशन के बेसिस पे, उसके बाद साइज ऑफ द रिवर के बेसिस पे, एंड देन फाइनली हमने पहले भी पढ़ा हुआ फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया है अपनी जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको हिमालयन और पेनिनसुलर फॉर्म में। उसके बाद हमने हिमालयन ड्रेनेज से रिलेटेड थोड़ी डिटेल्स पढ़ ली थी, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था वो पढ़ लिया था। नाउ वी नो कि जो अपनी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ये हिमालयन ड्रेनेज है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। नाउ वी नो कि जो जब हम इन रिवर सिस्टम के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं उससे पहले वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्चुअली अ रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम है द मेन रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो उस पूरे को हम क्या बोल देते हैं, रिवर सिस्टम बोल देते हैं। ओके, एंड सो वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट दी 3 रिवर सिस्टम, तीनों जो हमारी रिवर सिस्टम है इन द हिमालयन ड्रेनेज, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। So now we will be starting obviously with our Indus drainage system. Okay, so जो अपना Indus drainage system है, as you can see it on your screen, this is Indus system. वैसे तो Indus system अपने इंडिया के काफी इस कश्मीर के उस एरिया में भी जाता है जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले जो अपने को पता है कि जो 5 मेन ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, दे आर रियली सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया एंड बेसिकली जो अपना नदन पार्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए वी नीड टू स्टडी द इंडस सिस्टम। दो इसका जो मेजर पार्ट है वो विच लाइज इन पाकिस्तान, but obviously we know nature does not initially divide things according to the political territories, we human beings have actually divided it. So obviously most part of Indus river lies in the Pakistan area, but a major part of it also lies in India. That is why we will be studying about the this Indus River in great detail. So before moving into the greater details of it, अपने को सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि actually में this river is also known as the Sindhu River. Why it is called? क्योंकि initially जब Europeans and Western powers आए थे, so they could not call it Sindhu, नाम इसका सिंधु ही था, but they could not speak it properly, तो उन्होंने इसको इंदौस और फिर इंडस ये करा दिया, which we have already done in our very younger classes, I suppose 6th 7th. Okay, अब उसके बाद ये जो इंडस रिवर है ये बेसिकली इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स ऑफ द वर्ल्ड and it actually covers area of 11,65,000 square kilometer in India as a whole, but इसमें से जो इंडिया में पार्ट है वो है 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर, और टोटल लेंथ जो है इस रिवर की वो है 2,880 किलोमीटर, और इंडिया में 1,114 किलोमीटर जो इसका पार्ट है वो इंडिया में रहता है। ठीक है, नाउ इट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर नियर बोकाचू, और जो तिब्बतन एरिया में है, और ऑल्टीट्यूड है 4,164 किलोमीटर बेसिकली in Kailash mountain range. Now we will just have a look at the location that we are just talking about. If you look at this map in briefly, let me just enlarge it, and if you try to notice it in greater detail, you will understand that which is our Indus river. The first thing that we need to know obviously कि Indus river है कौन सी अपनी। If you see properly, this is our Indus river. Okay, ये जो okay, so this is our Indus river, and it finally goes and flows into the Arabian Sea, as we can see it clearly. So this is our Indus river, and this Indus river starts from somewhere you can see in Tibet region, and ये जो Tibet region है इसी में if you see it properly, ये जो अपनी Indus river है ये जो इसकी location है, it is somewhere, if we want to focus it, just give me a second, I'll just try to
shorten up this picture and things will be more clear. Now, as I told you, just have a look at this map again. This is our Indus River. Okay. And if we want to note the location of the origin of the river, then clearly if you want to see this and you want to mark it according to the latitude, you can easily notice कि this is somewhere what 31 degrees and 15 minutes north. Okay, if you want to mark it with the latitude, मतलब latitudinal location. उसी टाइप से अगर हम इसका longitudinal location करने की कोशिश करें, then if you want to see the exact location, here again you can notice it is 81 degrees 40 minutes east. ठीक है, तो ये लोकेशन क्या है? This is the location, this is somewhere you can say this is the origin of river Indus. Okay, so I suppose with this it has become clear कि जो इसकी origin है वो कहाँ से है, and now you don't just have to mug up the things, you can easily remember them if you know the locations. And then उसके बाद हम इसकी और थोड़ी details कर लेते हैं. Now we know that ये तिब्बतन एरिया में है and somewhere near the कैलाश mountain ranges जो है इसका origin होता है. Now तिब्बत में this river is known as सिंगी कम्बम. सिंगी कंबन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लायंस माउथ इन द लैंग्वेज ऑफ बेसिकली जहां से ये फ्लो करती है इनिशियली तिब्बत में, उसको हम लोग ये सिंगी कंबन के नाम से बोलते हैं एंड इसका मतलब होता है लायंस माउथ. उसके बाद नाउ जस्ट लुक एट द डायरेक्शन. इफ यू लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, then in which direction it is moving, we know if the directions, this is our north, this is our south, this is east, and this is west. Now which is this direction? This is northwest. Now you know this is the northwest direction and this river is moving towards the northwest direction. So that means ये clear हो गया अपना कि ये northwest direction की तरफ move करती है. कहाँ पे move करती है? It is moving in a northwest direction basically between the two mountain ranges, Ladakh and Jaskar. Okay, this is Ladakh range and here this is Jaskar range. तो you can notice easily कि जो लद्दाख और जास्कर रेंज है उसके बीच में फ्लो करती है ये रिवर. ओके, यहाँ पे when this river is flowing and when this river is flowing between the Zaskar and the लद्दाख रेंज, और उसके बाद ये जो रिवर है ये यहाँ से इंडिया से मूव करके कहाँ जाती है? बेसिकली इंडिया के जो कश्मीर वाले एरिया है वहां पे ये फ्लो कर रही है एंड देन फाइनली it covers a major part of Kashmir and then it continues to move and then it finally moves from Ladakh area से बल्तिस्तान की तरफ मूव करती है इसके बीच वाले एरिया में एंड देन वहां से ये लद्दाख रेंजेस हैं, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस समवेयर है, उनको क्या करती है, उनको कट करते हुए जॉर्ज बना के क्या करती है, बेसिकली गिलजिट एरिया जो है जम्मू एंड कश्मीर में, अगेन बल्तिस्तान के थोड़ा सा ऊपर की साइड है, नॉर्थ की साइड है, वहां से ये फ्लो करके क्या करती है, इट देन फाइनली it moves into Pakistan near Chilas in the Dardistan region. Okay, Dardistan region is somewhere है जहां से ये enter कर रही है and it has this area actually is included in Pakistan as well as India. यानी उसका कुछ portion इंडिया में, कुछ portion कहाँ पे है? पाकिस्तान में. So here again let me just make things clear कि ये जो जस्कार रेंज है यहाँ पे और यहाँ पे है लद्दाख रेंज. Okay, so I am repeating, this is the Zaskar range and this is the Ladakh range. इनके बीच से यहाँ से तिब्बत से होते हुए ये रिवर इंडस फ्लो करती है, फिर उसके बाद लद्दाख रेंजेस के अक्रॉस जाके उसके बाद ये वहां से फ्लो करती है बेसिकली बल्तिस्तान के अराउंड, और उसके बाद गिलजिट जो है वहां पे एक बहुत स्पेक्टेकुलर गॉड्स बनाती है जम्मू एंड कश्मीर में, फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर देती है बेसिकली यहाँ पे चिलाज एरिया वहां से, और दर्दिस्तान के थ्रू फाइनली जो इंडस रिवर है वो हमारी कहाँ एंटर कर जाती है, इट गोज इनटू पाकिस्तान. फिर पाकिस्तान में जाके इट फाइनली गोज एंड मीट्स द
अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, तो ये तो पूरा मेन इंडस रिवर का है। ओके, अभी तो इसमें अपने को इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो भी समझनी है। सो बेसिक अगेन, जस्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इट फ्लोज लाइक दिस एंड देन इट एंटर्स पाकिस्तान एंड देन फ्रॉम पाकिस्तान इट गोज इनटू द अरेबियन सी। ओके, यहाँ पे बीच में जस्कार रेंज नीचे की तरफ और लद्दाख रेंज ऊपर की तरफ होती है। ओके, फिर ये यहाँ से मूव करते हुए it goes and moves into the Arabian Sea branch. Okay. Now, with this, we basically understand the, you can say, जो main course किसका है, Indus River का है. Okay. So now let us move on to the, you can say, जो बाकी जो इसकी main tributaries हैं, उनसे related भी कैसे ये flow करता है, उनसे related कुछ चीजें अपने पढ़ लेते हैं. Now, this all we have already covered and now we are moving on to the next part. अब इंडस रिवर जो है, हिमालय में भी देर आर मैनी tributaries. Okay, now you can see I will not mark all of them, but I'll just mark few of them so that things become clear to you. Indus में क्या, it receives number of Himalayan tributaries. जैसे you can see this shock, I think you can see this one. Let me just change the color. Now you can see this is the शोक tributary. उसके बाद गिलजित है, उसके बाद जास्कर है, and there are many such tributaries which actually join this main river. Okay, यहाँ पे this is the main Indus river, the dark blue little bit thick one जो है वो Indus river है, और उसको बीच में जितनी भी ये ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रहे हैं, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज. यू कैन नोटिस ये हमारे हिमालयन एरिया में जो है, जम्मू एंड कश्मीर के अराउंड है, वहां पे भी इसको ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी ऐड होती है इस मेन रिवर में. श्योक, गिलजित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगर, रास्टिंग, द्रास, ये सारी की सारी जो रिवर्स है ये यहाँ पे क्या होती है, मिक्स होती है विद द इंडस रिवर. और उसके बाद फाइनली जो हिल्स ऑफ अटॉक है, यानी कि अब जब वो पाकिस्तान में एंटर हो जाती है, उसके बाद वहां से काबुल की साइड से काबुल रिवर आती है, बेसिकली फ्रॉम द साइड ऑफ अफगानिस्तान, एंड देन इट फाइनली मीट्स द Indus River. I think you can easily notice this. It is written the Kabul River. You can see this is the Kabul River and it is meeting Indus River. Okay, obviously in Pakistan it is meeting. और उसके बाद ये तो काबुल रिवर है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी और ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडस रिवर को ऐड होती है. कहाँ पे ऐड होती है? ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस. नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट द राइट बैंक? नाउ राइट बैंक बेसिकली हम ये देख सकते हैं इस साइड वाला जो है, बिकॉज if the river is flowing in this direction, basically just imagine yourself moving in this direction. जैसे इंडस रिवर जो ब्रह्मपुत्र अरेबियन सी की साइड मीट करने जा रही है, then the right side of Indus river will be दिस साइड, जहां से ये काबुल और बाकी जो रिवर्स आ रही हैं. तो ये जो रिवर्स हैं ये राइट साइड से आ रही हैं एंड राइट बैंक में मिल रही है. किसके राइट बैंक में? ऑब्वियसली इंडस रिवर के राइट बैंक में. सो हियर आई विल अगेन let you know few of the rivers and I think it will become easier for you to understand. Just see these rivers, like you can see ये जो smaller ones you can see like Swat, Kunar, ये वाली जो हैं, these rivers are coming, and along with that there are few other rivers like Kurram hai, and then we have like Tochi, Gomal, Sangar, ये वाली जो सारी rivers है, these are somewhere meeting the Indus river on its right bank. ठीक है, अब इसके बाद ये जो राइट बैंक में जब इसको रिवर्स मिल जाती हैं, उसके बाद वी विल नोटिस कि ये जो इंडस रिवर है ये फाइनली कहाँ जाती है? इट विल गो एंड गो टूवर्ड्स इट्स साउथ. और बेसिकली हम ये नोटिस करेंगे कि ये जो अभी जो मैंने इस साइड वाली रिवर्स की बात की है, कौन से वाली, जो खुर्रम, तोची और ये जो है, ये सारी की सारी कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है बेसिकली इन द सुलेमान रेंजेस. समवेयर हेयर इज द सुलेमान रेंजेस, यहाँ पे ये रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं एंड दे मीट द मेन इंडस रिवर. ओके, अब जब ये मेन इंडस रिवर को मिल जाती हैं, उसके बाद जो इंडस रिवर है यहाँ पे इट ऑब्वियसली मूव्स टुवर्ड्स द southern portion. और southern portion basically यहाँ पे क्यों? because it is just wanting to meet the Arabian Sea.
और उसके बाद साउथवर्ड में अगर हम देखें बेसिकली यहाँ पे एक एरिया है पंजनाद, यू कैन सी पंजनाद वाला जो एरिया है बेसिकली थोड़ा सा मिठानकोट के ऊपर है, ये वो एरिया है जहाँ पे इंडस रिवर से जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडिया से आती हैं, सतलज, बियास, रवि और रावी, चेनाब और झेलम, ये सारी की सारी कहाँ पे है, यहाँ पे पाकिस्तान में पंजनाद में मिलती हैं। एंड पंजनाद इज अगेन, इफ यू हैव सर्टेन आइडिया, पंच का मतलब बेसिकली पांच और नाद का मतलब यहाँ पे नदियां, तो बेसिकली जहाँ पे पांच नदियां मिलती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, पंचनाद। और इसी से अपना जो दिस एरिया, इफ यू कैन नोटिस इट, ठीक है, और यही इसी से अपना ये जो टर्म आया पंजाब, ओके, यानी कि जहाँ पे क्या है, पांच रिवर्स मिल जाती हैं। And we all know that we have a Punjab in Pakistan as well. तो obviously partition के बाद they also have a Punjab and we also have a Punjab. तो basically but नाम यहाँ से originate हुआ है जहाँ से पांच rivers जो है somewhat flow करती है and they meet at Panchnath. सो ये दिस इज द, एंड देन फिर ये यहाँ से उसके बाद इट कंटिन्यूज टू मूव टूवर्ड्स द साउथ और अरेबियन सी में जाके ये मिल जाती है ईस्ट ऑफ कराची में। एंड ये हमें पता है दिस इज द टोटल रूट ऑफ द इंडस रिवर। हमने बेसिकली पाकिस्तान में भी जो जो एरिया में ये फ्लो करता है उसका भी बेसिक डिस्क्रिप्शन कर लिया है। नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर विच फ्लोज फ्रॉम इंडिया बेसिकली, और जो इंडिया के एक मेजर पार्ट को इफेक्ट करती है, ठीक है। सो विद दिस वील स्टार्ट विद द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस विथ विच वी आर कंसर्न्ड, ओके। सो ऑब्वियसली द फर्स्ट दैट वी विल स्टार्ट विल बी झेलम। झेलम जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और ये एक स्प्रिंग एट वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है, वहां से राइज होती है अराउंड पीर पंजाल जो रेंजेस है उसके अराउंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, और फिर वहां से इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड द वुलर लेक। उसके बाद फाइनली ये पाकिस्तान में एंटर करती है फॉर्मिंग अ डीप गॉर्ज एंड इट देन जॉइंस चेनाब नियर जांग इन पाकिस्तान। अब एक बार मैप में वापस इसका देख लेते हैं लोकेशन। नाउ इफ यू नो दिस इज, इफ यू नोटिस कि दिस इज आवर झेलम, this Jhelum River is again, let me show you it through the bigger picture. Now this is the Jhelum River and somewhere here is also our Vuller Lake. Okay, let me show you on the other map. Now here this is very clearly shown, you can see it, this is the Jhelum River and this Jhelum River is, it is originating in the Pir Panjal ranges के foot पे at a spring in the in at a place called Verinag, ठीक है। और उसके बाद it flows and when it flows it in between also it has the Vuller Lake and then finally it meets Chenab River here and basically ये तो we know that it has by now entered Pakistan. Okay, so this is our, you can say, basic description about the river Jhelum, and it is obviously a tributary because it joins the main river which is our Indus. तो इससे I suppose things are clear. If you want to look at the map of Jhelum River also through this, if you just notice, this is our origination of Jhelum River. This is Jhelum. ये बीच में you can see this dot. This is Vuller Lake. Then Jhelum flows like this, and then it comes here, and then from this side Chenab is originating. Now you can see Chenab also. We'll study the next river Chenab. फिर यहाँ से ये मिल जाते हैं दोनों पाकिस्तान में. Okay. So with this I think जो अपना Jhelum की लोकेशन है वो clearly visible हो गई होगी. And clearly I think you will be able to next time if somebody asks you to locate Jhelum and Chenab, you will be easily able to mark it. तो अब चेनाब एक बार फिर से देख लेते हैं. It is almost the tributary of largest tributary of Indus. It is formed by two streams. Now Chenab itself is actually formed by two little streams and these streams are Chandra and Bhaga. और चंद्र और भागा basically join होते हैं at one particular place which is called तंदी near केलोंग हिमाचल प्रदेश में, और इसीलिए इस रिवर को हम चंद्र भागा भी बोलते हैं.
ठीक है, यानी चंद्र और भागा मिलके बने हैं चेनाब, इसीलिए उसको हम चंद्रभागा रिवर बोल देते हैं चेनाब को। पर फेमसली मतलब वी नो इट एज द रिवर चेनाब टू, it has two names. Okay, now keep these things in your mind because these are important 1 marks question. Okay, and this river actually flows for 1180 kilometers before it enters Pakistan. Okay, so with this I think you will be able to understand Chenab, and we have seen its location already. We have seen the location on our map of India. Still you can just again have a look at it so that you it actually imprints in your mind. ठीक है, तो ये अपनी चेनाब रिवर है in the bigger map, on the map of India. Again we have done it, and now we move on to our third tributary. जो अपनी थर्ड ट्रिब्यूटरी है ऑफ इंडस रिवर इज रावी. अगेन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी. और ये कहाँ पे राइज होती है? इट राइजेज एट दी रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. नाउ रोहतांग पास यू ऑल मस्ट हैव हर्ड इट बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन. पीपल विजिट इट ऑफन. हिमाचल प्रदेश में है बेसिकली, कुल्लू हिल्स के अराउंड. एंड उसके बाद ये चंबा वैली से फ्लो करती है. बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान it actually joins before entering Pakistan and joining the Chenab near Sarai Sindhu, it drains the area lying in the southeastern part of Pir Panjal and Doladal ranges. यानी कि चेनाब से मिलने से पहले और बेसिकली पाकिस्तान में जाने से पहले ये इंडिया में कौन कौन से एरिया में ज्यादातर ड्रेन करती है, वाटर प्रोवाइड करती है? साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल एंड द धौलाधर रेंजेस. नाउ हियर यू कैन आल्सो easily locate this river Ravi, and if you want to understand it on our bigger map, this is river Ravi. I think you can easily notice this is river Ravi. और ये it also again will meet the river Chenab itself. This is river Ravi. Okay, and this river is again we know a major part of it is also giving water to India. और ये basically बियास पुल जो है वहां पे रोहतांग पास के नियर यहाँ पे इस sorry that is Bias. Ravi actually is also originating in Rohtang Pass only, but in Kullu Hills of Himachal Pradesh, और फिर चंबल वैली के थ्रू फ्लो करके फाइनली जब पाकिस्तान में एंटर होके चेनाब रिवर में मिक्स हो जाती है. ओके, सो आई थिंक इससे अपने को जो रावी रिवर है उसकी भी चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई है. नाउ वी मूव ऑन टू आवर फोर्थ मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, और जो फोर्थ है वो है बियास. ये भी जो है एज आई सेड इट इज ऑल्सो ओरिजिनेटिंग बेसिकली इन रोहतांग पास, बट फ्रॉम बियास कुंड जो रोहतांग पास के थोड़े पास है, एंड एट एलिवेशन ऑफ 4000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल. मतलब इतनी हाइट पे इसका ओरिजिनेशन होता है. और ये भी फ्लो करती है बेसिकली कुल्लू वैली पे, और फिर डीप गॉर्जेस फॉर्म करती है कटी और लारगी एरिया में, जो कौन से वाले माउंटेन रेंजेस में है? धौलाधर माउंटेन रेंजेस में है. फिर ये एंटर करती है पंजाब प्लेन्स में, और फाइनली सतलुज रिवर से मिल जाती है इन द हरिके एरिया. नाउ अगेन यहाँ पे इफ यू सी ये जो दिस विच इज नॉट मार्क्ड, ओके, यानी सतलुज रिवर से जो बीच में ज्वाइन हो रही है, दिस इज द Bias river. ठीक है, now we will see this river in the bigger map so that again we are able to understand. Now if you notice this map, just have a look at this. It is clearly written also, this is our Bias river, और ये you can see कि originate होती है in near रोहतांग पास बियास कुंड में, और 4000 मीटर्स अबव मीन सी लेवल ओरिजिनेट होती है. कुल्लू वैली से फ्लो करके गॉर्जेस फॉर्म करती है धौलाधर रेंज के आसपास, एंड फाइनली पंजाब प्लेन में एंटर करके यहाँ पे देखो यू कैन नोटिस इट इज मीटिंग द सतलुज रिवर. ओके, एंड इट फाइनली मीट्स द सतलुज रिवर नियर द हरिके एरिया. अब so with this we have also understood the, and we are now I think we'll be able to locate the area from where the Bias river flows. Now we move on to the fifth tributary of the Indus river. जो फिफ्थ ट्रिब्यूटरी है दैट इज आर सतलुज.
ये जो है it originates from Rakshastal in near Mansarovar at an altitude of 4,555 meters. Now ये जो है it actually is you can say it is not originating in India. Okay, where is it originating? ये basically in the Tibet area, और यहाँ पे इसीलिए इसको बोला जाता है लॉकचेन खंबा। ऑब्वियसली उनके जो लैंग्वेज में जो उन्होंने नेमिंग कर रखे उसके अकॉर्डिंग। ये ऑलमोस्ट इट फ्लोज पैरेलल टू इंडस फॉर अराउंड 400 किलोमीटर। उसके बाद ये एंटर करती है इंडिया में एंड कम्स आउट ऑफ अ गॉर्ज एट रूपर, और फिर इट पासिस थ्रू शिपकिला ऑन द हिमालयन रेंजेस, फिर पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है। and it is actually one of the river which is considered antecedent river, क्योंकि ऐसा माना जाता है it existed very very long years ago, बहुत पुरानी river है। and one more important thing that we should know about this river is that it actually feeds the canal system of Bhakra Nangal project, यानी कि जो Bhakra Nangal project है it is actually built over the Satluj river. Okay, so this is again one very important 1 marks question, and you all should remember these 1 marks question because these are little bit tricky one also, and important, obviously help you to score good marks. This is the Satluj river, you can still see it and you can locate it. But if you want to have a look at the Satluj river on the bigger map of India, this is our Satluj river. If you notice this Satluj river, ये you can see it is somewhat initially parallel to Indus river. ये ऊपर अपनी Indus river है, this is our Indus river. तो Indus river से somewhat क्या है, parallel है। उसके बाद it finally enters India यहाँ से, फिर पंजाब प्लेन की साइड it flows, and then from India it finally goes into the पाकिस्तान एरिया, और फिर फाइनली बाद में वो इंडस रिवर को मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम तिब्बत इट flows parallel to Indus river, and then उसके बाद it enters India obviously by forming a gorge। उसके बाद शिपकिला वाले एरिया से पास के थ्रू हिमालयन रेंजेस से पास होती है, फिर पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है, एंड आफ्टर दैट इट हेयर बीच में हमें पता है ब्यास में ज्वाइन कर लिया था हरिकी के अराउंड इसको सतलज रिवर को, एंड देन इट फाइनली एंटर्स पाकिस्तान, और उसके बाद ये पाकिस्तान में फिर धीरे किसे मिल जाएगी, मेन अपनी इंडस रिवर से मिल जाएगी। एंड उसके बाद ये जो पूरी इंडस रिवर है फाइनली क्या करेगी, इट विल फ्लो। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि यहाँ पे जो पंजाब वाला एरिया है जिसको हमने पंजनाद भी बोला था, यहाँ से फ्लो करके ये फाइनली कहाँ चली जाएगी, अरेबियन सी में एंटर कर जाएगी। ठीक है, दिस इज द होल यू कैन से स्टोरी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द इंडस रिवर दैट वी शुड नो, दिस होल रिवर सिस्टम। ओके, ये जो अपना इंडस रिवर सिस्टम है, आई सपोज दैट इट इज क्लियर टू यू पीपल, and with map along with the map work also, because we have to do the map work also relating to this topic, so we should know the locations of the river. It is not that we will have to mug it up या ऐसे रट्टा जैसे मारना पड़ेगा, we should know it and we should be able to easily locate it. So I think things are clear. If you have still any doubt, just come back with your problems and we'll solve all your problems in the next class.